ଫାଇଲଟା ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ ରେ ସାଇ ଏଇଟା ଏଇ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଗୁଡା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଭରେଜ ଯୋଉ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ସେଗୁଡାକ ଏମିତି ଯୋଉ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକା ଦିଟାରୁ ଅଧିକା ଟାଇପ ମାନେ ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର ରହୁଛି ତ ସେଇ କେସରେ ଆଭରେଜ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଭରେଜ ବାହାର କରାଯାଉଛି ଆଭରେଜ ଟା ଲାଗୁଛି ସେଠି ଯେମିତି ଏଠି ବ୍ରୋମିନ କଥାଟା ସେ କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଇ ବ୍ରୋମୋ ଅକ୍ଟା ଅକ୍ସାଇଡ ଏ ଯେମିତି କହିଲା କାର୍ବନ ସବ ଅକ୍ସାଇଡ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଟେଟ୍ରା ଥିଓନେଟ ଆୟନ ଯୋଉଟା ସେଇଭଳିଆ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାର୍କଡ ୱିଥ asterisk ଏ ଯୋଉ asterisk ଗୁଡା କହିଛି in each species is exhibiting the different oxidation state oxidation number from rest of the atoms এই এলিমেন্টটা বিআরটা ব্রোমিনটা হলো of the same element in each of the species this reveals that in C3O2 two carbon atoms are a C3O2 suboxide two carbon atoms are presented plus two oxidation is ସେଇଟା ସେ ବୁଝଉଛି ଆଉ अरे जोटा तुमको काली सेदिन कहिछि रेकर्डेड ଦେଇଥିବ କେମିତି 16/3 ହେଲା କେମିତି 4/3 ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷ we may thus in general conclude that idea of fractional oxidation state should be taken with care and the reality is revealed by the structures only ଆମେ ସେଟାକୁ ଆମର କନଭିନିଏନ୍ସ ସକାଶେ ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଭରେଜ ନେଇଯାଉଛୁ ବଟ୍ ତମେ ଯଦି ତାର ରିଅଲ ଜିନିଷଟା କ୍ରକ୍ସଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ then it is you have to go by the structures molecular structures बनेगा then you can understand further whenever we come across the fractional oxidation state of any particular element in any species माने सही chemical ion हो molecules हो we must understand that this is the average oxidation number this is you need to माने एटा you fix up your mind fractional asila माने this is average in reality revealed by structures only coach barambar the element in the particular species is present in more than one whole number oxidation states individual oxidation number is whole number କିନ୍ତୁ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକା oxidation number ରହୁଛି Fe3O4 manganese tetraoxide ସବୁ tetraoxide are some of the other examples of the compounds ହେଲା ମନେ ରଖିବ ଗୁଡାକ question short question ବହି ପଢିଥିଲେ ମନେ ଥିବ which are mixed oxides where we come across with fractional oxidation of the metal atom या ଭିତରେ ଯେତକ metal atom ଅଛନ୍ତି Fe manganese lead ଏଟା ସବୁ ତାଙ୍କ fraction however the oxidation states may be in fraction as an O2 and O2 minus where it is plus minus এটা rule অনুসারে না କହିଥିଲା है ना oxidation number টা কেমতি তুমি আইডেন্টিফাই rule অনুসারে ଯାଇଛି why do the following reactions proceed differently କେମତି क्वेश्चन ଟେ ଦେଖିଲ ଏ ଟपिକ କଣ ପଢେଇଲା ସେ क्वेश्चन କଣ ପଚାରୁଛି why do the following reactions proceed differently ଏ reactions ଗୁଡା ଦେଇଛି Pb3O4 plus 8HCl ଗୋଟେ Pb3O4 4HNO3 ସେ କହୁଛି ଏକ proceedings ଗୁଡାକ process reaction ଟା complete ହଉଛି ସେଟା ବହୁତ different କାହିଁକି ହଉଛି is actually a stoichiometric mixture of 2 mole of PbO से कौची ये जो and 1 mole of PbO2 in PbO2 ये concept गुड़ा का जो कही ची ये जिनसटा P3O4 नहीं ये जो जिनसटा से कौची it is actually a molecule टा is a stoichiometric mixture of 2 mole of PbO है ना एथर तो PbO नहीं एथर अच्छी PbO2 अच्छी PbO and 1 mole of PbO2 बुझिगला
In PbO2, lead is present in +4 oxidation state. Eight PbO2. PbO दीटा मोल PbO और गोटे मोल PbO2 मिसिकरी Pb3O4 बनुଛି ହେଲା whereas the and it's a +4 oxidation state से कहला ହେଲା whereas the stable oxidation state of lead in PbO is +2 4b2 rb2 से लगे PbO लगी PbO2 thus एटा stable oxidation number नुह एटा गोटे से transition material metal बोले कि सितार नहीं है एटा गुडे वैलेंसी था ना PbO2 thus can act as an oxidant oxidizing agent कहेंगे oxidant कहला नहीं हाँ या भीतर रिडक्शन होउची ହେଲା and can act as an oxidizing agent and therefore can oxidize chlorine chlorine को oxidize करियो माने एदरो ऑक्सीजन जिवो ना कारण एठी रिडक्शन हबो एया कहथिली मु जो डेफिनेशन टा कहथिली यू रिमेंबर दैट ये टिके खाली लैंग्वेज अलग रखुची बट तमे से वर्डिंग सुडा मन रखो होला PbO2 निजे से मॉलिक्यूलर रिडक्शन होची से मॉलिक्यूल टा रिड्यूस टू यूज बस सेथि लागि से मॉलिक्यूल टा को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहले मैं एमती बुझैथिली जो मॉलिक्यूल रे ऑक्सीडेशन होची से मॉलिक्यूल टा को रिड्यूसिंग एजेंट कहले and therefore can oxidize एटा बुझिलो तो से क्लोरीन को जदी ऑक्सीडाइज करिवो ताले या देरु ऑक्सीजन एटम टे जीवो से तने गला माने एटु रिडक्शन होला ना and बचिलो we may also keep in mind that PbO is a basic oxide metal oxides are basic in nature non-metallic oxides are acidic in nature पढितलो पिला बेलु पढिचो therefore the reaction से जो कहला can be splitted into two reactions namely a data जिनसो से कला 2 PbO और PbO2 कला बुझिलो since HNO3 तो एई जो पर्टिकुलर केस एगुड़ा को मन रखिबा दरकार केमिति स्प्लिटिंग होची कोन होची को केस रे होची एटा को डिटेल ले पढा हैनी ना को रिएक्शन से स्प्लिट होची कोन होची तो से जहां पर्टिकुलर गोटे सिचुएशन को नेकरी करिची यू नीड टू रिमेंबर पढ़ा पढ़ी कले रेगुलर मन रहइबो Pb3O4 टा PbO PbO2 मिसिकरी होची तो PbO पई का से गोटे कला पुनी PbO2 पई का गोटे कला बट एठी ना एठी भी सेम की करची देखो सी दिस एठी गोटे अलग प्रकार करूची HNO3 संगे गोटे कथा करूची एटा जेम देखो HCl पई का दीटा माने सबऑर्डिनेट रिएक्शन होता बट HNO3 पे अलग लिखिबो सेन बुझिबो सेटा हैला एटा एसिड बेस रिएक्शन एटा रिडॉक्स रिएक्शन एटा से बेसिक कहला PbO2 एटा एसिड टा since HNO3 itself is an HNO3 टा को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो पिला बेले पढथिलो क्लास 10th रे पढथिलो पिला बेले में क्लास 10th रे नहीं 10th रे पढथिलो मेटल नॉन मेटल रे से होची सबु मेटल संगे एसिड मिसले हाइड्रोजन गैस बाहर किंतु कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड संगे कोन से मेटल मिसले हाइड्रोजन गैस काहे की बाहर है ना ये निजे गोटे ऑक्सीडाइजिंग है माने या एटा रिड्यूस हो जिवो एटा रिड्यूस हे कि NO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बाहर मेटल संगे एटा तो मेटल ऑक्साइड ना एटा खाली मेटल नो एटा प्योर मेटल था तबे सेठु जानि छ एटा गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट it is unlikely that the reaction may occur between PbO2 and HNO3 काहे PbO2 टा भी गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना तो it's very माने unlike that एका भितरे रिएक्शन हबो एटा गोटे ऑक्सीडाइज रे त खाबो केमति however the acid base reaction occurs
ହେଲା PbO ଟା ବେସ୍ HNO3 ଟା acid ସେଟା redox ବାବଦରେ ହବନି ଏଇଟାକୁ explain କରିବାର ଥିଲା ଏଥିରେ सी ये क्वेश्चन रो मीनिंग केते डिफरेंट हां एई कांसेप्ट गुडा का डिस्कस करिवार ଥିଲା इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन बेटा छोटो क्वेश्चन नुह एटा एटा हम कहली एथरे रिडॉक्स रिएक्शन टा एटा को से ब्रेक करके दीटा छोटो क्वेश्चन भी कर दे पारती बा कोनसी और गोटे क्वेश्चन पचार दे पारती HNO3 केस रे PbO संगे सी रिडॉक्स रिएक्शन हबो नै कारण दीटा को ऑक्सीडाइजिंग है बुझिला कथा बट एसिड बेस रिएक्शन नहीं परी ये दीटा को ब्रेक करके देखी छ ना गोटे होची एसिड बेस गोटे होची रिडॉक्स रिएक्शन हैला it is passive nature of PbO2 against HNO3 that makes the reaction different from the one that follows with HCl এটা গোটে passive nature PbO रो lead oxide balancing of redox reactions two methods are used to balance chemical equations for redox process one of these methods is based on the change of oxidation एरा टिके हल्का कर दीजिए कि फुल अच्छी और हमें हल्का टा नहीं चाहिए डार्क टा नहीं and the oxidizing agent and the other method is based on splitting the redox reaction into two half reactions ଏଇଗୁଡାକ ଶିଖିବ ये कहूची गोटे मेथड होची ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करियो आउ गोटे मेथड होची splitting the redox reaction to half reactions एइटे शिखिबो से केमते half reactions one involving oxidation and the other involving reduction गोटे oxidation देखिबो half reaction में गोटे reduction देखिबो yeah both these methods are in use and the choice is the rest on the division तम ऊपर डिपेंड oxidation number method ta sikhochi and writing equations for oxidation reduction reactant just as for other reactions the compositions and formulas must be known for the substances that react and for the products of minimum eta to janithba darkar the oxidation number method is now best illustrated in the following steps ebe seta se buझ pratham method ta tapore b ta bujhibo jo splitting reactions mane half reaction jo likhibo write the correct formula for each of the reactant products. Identify atoms which undergo change in oxidation number in the reaction by assigning the oxidation number to all elements in the reaction. So that's the oxidation number. The rules calculate the increase or decrease in the oxidation number per atom and for the entire molecule ion or in which it occurs. If these are not equal, then multiply by suitable number so that these become equal. Equal karo, multiply karenge. If you realize that two substances are reduced and nothing is oxidized or vice versa, something is wrong. Theta substance reduce ହେଇଛି କି theta oxidize ହେଇଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଛି. Either the formula of reactants or products are wrong or the oxidation numbers have not been assigned properly. It could be ଭୁଲ ହେଇଛି. Ascertain the involvement of ions if the reaction ascertain the involvement of ions if the reaction is taking place in water and H plus or OH ions to the expression on the appropriate side so that the total ionic charges of reactants and products are equal. Ascertain the involvement. मैंने तुम एटा को निश्चित करा मने मने ions if the reactions involvement of ions so the रोची है केतेबेले ना if the reaction is taking place in water aqueous add H plus or OH minus ions to the expression on the appropriate side. जदि H plus जदि water संगे reaction होची ताले जो को side रे H लगेया कथा बा OH minus लगेया कथा ताको accordingly लगाओ एक होची
to the expression on the appropriate side so that product reaction, so that the total ionic charge of reactants and products are equal. Ionic charge ଏପଟେ ଗଣିବ ସେପଟେ ଗଣିବ ଦିଟାଙ୍କ same ଥିବ. If the reaction is carried out in acidic solution, use H plus ions. In the equation, if in basic solution, OH minus. से confirm कला. जदि वाटर रे थिबो तमको टिके भाबिए को पड़िबो को पटरे तमे H plus लगइबो कि OH minus लगइबो. यदि एसिडिक थिबो ताले खाली H plus confirm हे गेला लगइबो. यदि बेसिक थिबो OH minus लगइबो. तीनटा केस रे डिस्कस करछ. Make the numbers of a hydro तापरे ionic charge दिटांग साइड रो प्लस करिवो सेम थिबा दरकार. Product of reactant side. E is insert. A step. Make the numbers of hydrogen atoms in the expression on the two sides equal by adding water. Make the numbers of hydrogen atoms in the expression on the two sides equal by adding water H2 plus molecules to the reactants or products. Hydrogen atoms इनमें का number टा make the number of hydrogen atoms the expression on the two sides equal by adding water molecules to the reactant or products. देखियो जो पड़ा करेंगे तुम सुधा. Now also check the number of oxygen atoms. If there are same number of oxygen atoms in the reactants and products, the equation then represents the balanced reduction reaction. Let us now explain the steps involved in the method given below. एक example ले देखिए. भला दरकार है किंतु बड़ोटे बुझी चीज़ कुछ ना. कोड सॉरी जीवो संग संग को तुम कहले 6-7 पेज अछि म कहले एथरे 8 बडी छडी बनै दे. Write the net ionic equation for the reaction of potassium dichromate 6 together. Eta here K2Cr2O7 with sodium sulfite eta Na2SO3 in an acid solution to give chromium 3 and sulfate ion. Ion कथा कहला the skeletal ionic equation skeletal एटी किछि बैलेंस न होछि हला इजी तमे जरा Cr2O7 लिखिला हला एटा कोन है ना Cr2O7 dichromate potassium dichromate एटा होछि potassium K2 ना aqueous करूछे ना एटा तो SO32 एटी ये टूटा यार ना SO3 aqueous chromium हला तो बाहर छि ना chromium 3 है 3 हला and sulfate ion SO42 metals गुडा ना तमे जोडा radicals गुडा के देखिबो खाली जो तरे ऑक्सीजन हां नहीं आयन जीरो नो सेटा सेतरे ऑक्सीजन आयोनिक हां हां नहीं आयोनिक टा को देखिबो ना जो तरे आयन गुडा का रोज स्केलेटल आयोनिक इक्वेशन ए एटा को आयंस कहूची रेडिकल पार्ट हला assign ionic equation माने तमे रेडिकल पार्ट में के नमो खाली एटा तो पुनी क्रोमियम नहीं छे ना assign oxidation number for chromium and S sulfur एटा पक्की दी वाला आंसर होला पक्की दी वाला this indicates the dichromate ion is the oxidant माने oxidizing agent तमने इथरो ऑक्सीजन खसुछ होला नहीं ना ठीक देखो अरे कौन सी नहीं and the sulfite ion एटा SO32 is the reductant and add SO4 is reducing agent ना तादर oxidation होउची सेले केटा reducing agent बुझी परछो calculate the increase and decrease of oxidation number and make them equal
From step 2, we can notice that there is a change in oxidation state of chromium and sulfur. Chromium ଆଉ sulfur. ଏଠି 6 ଏଠି 4 ଏଠି 6 ଏଠି 3 ହେଲା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ଇକ୍ୱାଲ କରିବ କହିଥିଲା ନା so there is decrease of plus କହିଦେଲା oxidation state of sulfur changes from plus 4 to 0 gala to make the increase and decrease oxidation state equal place numeral 2 before chromium ion on right hand side and the numeral 3 before sulfate ion on देखो 83 लगेगा ହେଲା हाँ 83 लगेगा 82 लगेगा 2 3 जा 6 ହେଇଗଲା 83 2 जा 6 ହେଇଗଲା ହଁ ଏଠି ଲଗେଇଲା ନା 3 2 6 ଏଠି 3 2 6 ଥିଲା କି ଓହୋ ଏଟା ଦେଖେ ଜଣା नहीं ଆମର oxidation state chromium changes from 6 to 0 chromium ର ଆଉ sulfur ର ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ନା chromium ର ଆଉ sulfur ର ଠିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ସେ ଏଠି କୋଉଠି ଏଠି chromium ରେ ଲଗେଇଲା 2 into 3 6 ହେଇଗଲା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଆଉ sulfur ରେ 3 ଲଗେଇଲା ସେ ଦିପଟ ସାଇଡ ରେ ଲଗେଇଛି ହେଲା 3 4 12 3 before sulfide ion on right hand side and balance the chromium sulfur अच्छा अगर right hand side लगे के तापर करो एटा 3s होची है ना एटा एटा भी से 3s होची और एटे तो सल्फर रो 4 इथला 6 एटी गेला ओहो 3 2 जा 4 टाकू 3 लगे देला बळको एटा 4 3 4 12 भी जाउछे ना हां से आगु को नहीं छि इक्वेशन वाला एमती कम देओ अरे एटी 3 4 जा 12 भी जाउछे ना एटी 3 1 ही रहउछ टोटल एटी केते होउछ की 4 6 10 ओहो देखियो as the reaction occurs in the acidic medium H plus लगे पड़ी कोई दिला further the charges are not equal charges equal no both sides so add 8 H plus ions on the left to make ionic charges equal 8 H लगेले equal है जीवो 2 3 दुने 6 3 दिशा कुछ देखिला 2 এটা 2 এটা ক্রোমেট আয়ন না 2 রইলা চার্জ यार 2 রইলা SO3 2 4 তো এটি 4 1 -3 ହେଇଯିବ এটা -2 -4 +1 এটা 3 2 5 ରହୁଛି ନା 3 2 ରେ 1 ହଁ ହଉନି ତ Eight H plus the equal केमती हला and not equal and both sides add 8H so both side रे 8H कर तो गोटे side रे 8H करची on the left to make ionic charges see add no see कौची and further the ionic charges are not equal on both the sides and 8H plus on the left side खाली 8 left side रे तो 8H plus कहीं की करेगा तुम 2 6 8 है तेरे 6 तो 6 12 12 ଏଠି କଣ 12 ହଉଛି 2 ଏଟା 6 8 8H plus କାହିଁକି ଲଗେଇବୁ
नहीं आयोनिक चार्ज केमती इक्वल तुम कर एठी रहउची 6 एटू ज 6 एठी रहउची 2 6 plus 2 8 एठी 8 16 6 এটা হচ্ছে 6 12 হচ্ছে না finally count the hydrogen atoms से कौन एमती लिखिला एटा देखियो and add appropriate number of water molecules add appropriate number of नहीं था किसी अच्छा finally count the hydrogen atoms and add appropriate number of water molecules अच्छा hydrogen atoms plus करियो and count the atom and add appropriate water molecules देखिबो कोठी कम बेसी होची हो अच्छा देखिबो तो हाइड्रोजन एटम नहीं एठी हाइड्रोजन कैलकुलेट कलो हाइड्रोजन कैलकुलेट कला बेलको एठी 8H 34H2O लगिबो नहीं 4 6 नो एटा N2 है एटा 4H2O लगिला एठी 8 अछि ना 8 हाइड्रोजन अछि ना एठी तो हाइड्रोजन टोटली नाही ना तो H2O लगिया पे कहै छी ए प्रोडक्ट साइड रे 4H लगी देले हिजबो 4H2O हो जाय ना एटा हाइड्रोजन ऑटोमेटिक केटा अछि 8टा ऑक्सीजन एटम 4टा अछि सोची हां एठी भी बैलेंस होची ना एबे बैलेंस कितना equal on both sides left them equal एटा एमती केमती कर ना नहीं सरी इक्वल केमती लिख दो टू मेक आयोनिक चार्ज इक्वल तो लिखि देलु त माने पिलेटा सही स्टेप रे खोजिबो ना केमती इक्वल होची बोली एकरा कहू ना बुझी गेलो आंसर permanganate ion reacts with bromide ion in basic medium to give manganese dioxide and bromate ion or at the balance ionic equation for the reaction how permanganate ion reacts with bromide ion eta pakhila MnO4 ହେଲା कौन बनुची इधर एटा स्केलेटल इक्वेशन है किसी दरकार नहीं है तमन मैंगनीज ऑक्साइड बनुची डाइऑक्साइड बनुची मैंगनीज डाइऑक्साइड और ब्रोमाइड हां तो इगुडाक तमन मन रहबा दरकार अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट असाइन ऑक्सीडेशन बहुत पढ़िबा को पड़िबो पढ़िले नहीं मन रहबो सब नंबर बसिबो पड़िबो और असाइन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मैंगनीज नंबर तो 7 एक पखेला एटी 4 मैंगनीज डाइऑक्साइड रे 4 केमती पकोची माने MnO4 रो जो आयन टा सथरे मैंगनीज 7 रहउची एटा भी गोटे मॉलिक्यूल बढिया रहउची ना तो 7 रहउची बट MnO2 रे से 4 ही रहउची हां ऐसे रूल अनुसार करूची हला ब्रोमीन 5 रहउची एठी ब्रोमीन 1 रहला एठी ब्रोमीन 1 रे 5 तो ई गुडा को जणा न पड़ले भारी असुविधा नहीं ना ना रूल अनुसार करूची ऑक्सीडेशन रूल हम से जो नंबर जो रूल रहेगा सेटा पर देखि दो भाई वीडियो रे इंटीग्रेट करले भी हबो जे हम देखुथले जस्टिफाई द रिएक्शन
ନା ସେଗୁଡାକ କାଢିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ, ମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଇନି ସେମିତି।